So today and in all the remaining lectures, we are going to study scattering. And more precisely, scattering of plane waves from other objects. ज़्यादातर हमारा जो फोकस है वो सिंपल प्रॉब्लम पर ही होगा, जो 3-4 लेक्चर्स हैं उनमें। आइडिया ये है कि आपको कुछ बेसिक्स जो हैं स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स की, उनके बारे में अंदाज़ा हो जाए। So the first problem that we are going to tackle today is scattering from charge particles. This is also known as Thomson Scattering. So, और स्पेसिफिकली जो थॉमसन स्कैटरिंग है या जो टॉपिक हम डील करेंगे, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लो इंटेंसिटी एंड लो एनर्जी प्लेन वेव्स। लो फ्रीक्वेंसी, low intensity, आप ऑलरेडी जो है इसी से फेमिलियर है कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्कैटरिंग चार्ज पार्टिकल से हम कैसे डील करते हैं, which is sometimes also known as Compton scattering. आप जो लाइट है उसको एज ए फोटॉन्स मॉडल करते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल्स है दैट्स आल्सो लाइक अ पार्टिकल एंड यू कैन स्टडी लाइक दैट। अगर जो वो इटसेल्फ भी अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल अज्यूम करते हैं, जबकि उसके लिए भी बेसिकली आपको एक वेव पैकेट अज्यूम करना चाहिए। And even for the photon, instead of just a point particle, you should assume it to be a wave packet. लेकिन approximately आप उससे उसको एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इन जनरल और जो स्कैटर लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी और कुछ एनर्जी उसके पास रहेगी, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। जो थॉमसन स्कैटरिंग है, इसमें हम स्टडी करेंगे इस रिजीम के अंदर जिसमें लो फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसका मतलब ये है कि वी कैन मॉडल द वेव्स एज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसकी डेफिनेटली जब स्कैटरिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव्स की चेंज नहीं होगी। सो सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको आज हम देखेंगे, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा कि हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। जी, दैट इज मोर एक्यूरेट इन अ वाइडर स्पेक्ट्रल regime देन दिस वन। ठीक है, उसमें जो आइडियल तरीका है स्कैटरिंग स्टडी करने का वो ये है, लेट्स से यू हैव अ पार्टिकल एंड यू हैव लाइट। The particle is not a particle in classical sense. It's actually a wave packet. ठीक है, और जो photon है, this is also a wave packet. So you are essentially studying the scattering of a wave packet from another wave packet, जिसको आप let's say as a potential model कर लें, and then you study the scattering of the wave packet from the potential well, and potential well की वजह क्या है, potential profile. So उसमें चूंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, हमें पता है कि अगर हम वो केसेस लें जो क्लासिकल केसेस को रिजेंबल करते हैं, लेट्स से वी हैव
a very heavy particle and low energy light. So उसके रिजल्ट और फिर क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट्स मैच करते हैं। जब हम क्लासिकली स्टडी कर रहे हैं तो जैसे मैंने लिख दिया है, दिस इज स्कैटरिंग इन लो फ्रिक्वेंसी लो इंटेंसिटी रीजन। सो ये सिर्फ यहीं पे वैलिड है। Let's say scattering of X-rays from electrons, that's not going to be covered by this. So the quantum mechanics है, that is in a way a generalization of the classical physics. तो वही validity की domain है जो already आपके ज़हन में है। Let's say the validity of quantum mechanics versus classical mechanics. ठीक है? Okay, so स्कैटरिंग प्रॉब्लम जो है उनको मॉडल करने का एक तरीका ये है, यू हैव इंसिडेंट लाइट, सो व्हाट यू डू एंड लेट्स से यू हैव इंसिडेंट ऑन समथिंग, सम स्कैटरर। सो एक तरीका ये है कि क्योंकि ये जो इंसिडेंट वेव है, इट्स नथिंग बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल सेट द चार्जेस इन दिस मटेरियल इन मोशन, एंड द चार्जेस इन मोशन आर एसेंशियली करंट्स। ओके, सो यू कंप्यूट करंट्स एंड देन you just used what we have already studied, कि कोई भी हमें पता कोई भी करंट जो है उससे रेडिएशन हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, and that's how it goes. So we are going to follow this method, which is more like related to the physics of the problem. This is how it actually happens as well. अगर से बहुत सारे problems में you can model scattering problem in other ways, like without thinking of currents that are induced and modeling it in other way. लेकिन हम इस method को जो है वो follow करेंगे. So आज जो हमारा problem है, it's scattering of plane wave from a charged particle Q. So essentially we have a wave which is incident on a free charge particle. So this sets this charge particle in motion, and then we can compute the current, और फिर उस current से जो radiations हैं उनको हम compute करेंगे. So let's assume that our incident wave is suppose it is X polarized and it is propagating along Z-axis. So let's say this is Z-axis, this is X-axis. So where K naught is omega over C. So we are incidenting the light in free space. So what would be the incident magnetic field? It would be directed along Y and have a magnitude E naught over C. So in general, the force on the particle is तो यहाँ मैं आपके मिड टर्म के जो एग्जाम्स हैं उन पे भी कमेंट करता जाऊँगा, ठीक है। सेकेंड मिड टर्म में एक प्रॉब्लम इस तरह से था जिसपे आपने एक चार्ज पार्टिकल की मोशन डिस्क्राइब करनी थी ना फील्ड, उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने एक्स एक्सिस का लगाई थी दी हुई, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों ने ये किया है कि जब इस फोर्स को कंप्यूट किया है तो यहाँ पे जस्ट वी एक्स पुट कर, ठीक है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इनिशियली तो वी एक्स है बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वाई के अलावा था, so that will set particle moving in some other direction. So जब आप प्रॉब्लम स्टार्ट करना शुरू करते हैं सॉल्व, तो इन जनरल यू शुड हैव ऑल थ्री कंपोनेंट्स। तो उसमें इनिशियल कंडीशन जो है वो बाद में आप इंप्लीमेंट करें कि इनिशियली क्या हो। इन जनरल वेलोसिटी कैन हैव एनी कंपोनेंट, तो उस वजह से कुछ लोगों के पॉइंट्स हैं वहाँ पे कम हुए। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम,
अगर हम लो इंटेंसिटी वेव अज्यूम कर रहे हैं तो E naught is small, which means E naught over C is even smaller. So let's neglect this force. हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा ऑलरेडी, इसको भी इनकॉर्पोरेट करके, राइट? Sets it into motion in a figure 8 type thing. क्योंकि ये फोर्स इससे काफी कम है by a factor of like 1 over C. So let's neglect this. So we have only this force. और अगर ये हमारे पास फोर्स है तो what is our Newton's second law? So this force is Q E naught x hat, and let me write it in time domain. So this is x hat cosine k naught z minus omega t. This is equal to m r double dot. अब इसका चूंकि x कंपोनेंट है तो ये इसके x कंपोनेंट के बराबर होगा, इसके जो y कंपोनेंट्स है वो 0 के इक्वल आएंगे. So there is no acceleration along y and z axis, so it means the motion is steady, and if initially the charge is at rest, there is no velocity along y and z axis. So our basic equation of motion then is m vx naught. And what is vx now? Vx will be, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. कोसाइन का इंटीग्रल होता है साइन, और इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो ये माइनस ओमेगा जो है वो नीचे आ जाएगा. सो वी गेट माइनस q e naught ओवर m ओमेगा साइन k naught z माइनस ओमेगा t प्लस कांस्टेंट है. बट इफ यू अज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0 when this factor is 0, so the constant is 0, because sine of this 0 is 0, so that constant is 0. जी? नहीं, इसको ओमेगा टी माइनस ये लिख देंगे, माइनस इसमें दो से x के लिए इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर लें. सो साइन का इंटीग्रल है माइनस कोसाइन, उस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, फिर एक माइनस 1 ओवर ओमेगा नीचे आएगा. दिस इज माइनस q e naught m ओमेगा स्क्वायर कोसाइन k naught z माइनस ओमेगा t प्लस सम कांस्टेंट c1. अब जब ये 0 होगा तो c1 की वैल्यू क्या? लेट्स से x is 0, that initially it's at the origin. So when this is 0, x is 0, so cosine of 0 is 1, so c1 is plus this thing. So इसको अगर मैं कॉमन ले लूं, यार अब प्लस क्यों देगा, वो माइनस. ओके, अब आप इसको अगर इमेजिन करें तो ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये ओरिजिन है, ये z एक्सिस है, इधर से वेव आ रही थी जो कि x पोलराइज थी, वेव इधर को प्रोपोगेट कर रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो पार्टिकल है ये x एक्सिस के अलाउंग ऑसिलेट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड दिस थिंग, whatever the z is. So it's not moving along z, क्योंकि हम खैर इसको निगलेक्ट किया होगा, so उसकी वजह से. अदरवाइज जब हमने उसको किया तो हमें पता था this makes a figure 8. So neglecting that thing, this is just
ऑसिलेटिंग चार्ज। अब अगर हम इसको देखें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से, इट्स गिवन बाय दिस, एंड लेट्स इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये फैक्टर कितना होगा, लाइक 10 power minus 19, 10 power minus 31, and let's say the frequency is 1 terahertz. So this is 10 power 9, 18, and then this is m is minus 31. So this factor is pretty small if E naught is small. और let's take this to be 0. उसका फायदा जी? अब टेराहर्ट्ज़ से is low. Like lights जो है, जो visible spectrum है, इसमें light की frequency होती है. आप लोगों ने किसी एक क्वेश्चन में कंप्यूट भी की थी, around 10 power 15. It's like 1000 terahertz. So it's in that ballpark. So it's even smaller than that, 1000 times. तो अगर ये बड़ा भी होती है फैक्टर, फिर भी स्मॉल ही होगा उससे. So when this factor is small, we can approximate x with 0. उसका फायदा ये होगा क्योंकि हमें पता है कि करंट डेंसिटी जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, we can write it like this: q, its velocity, delta of r minus r naught, where r naught is the position, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है वो एग्जिस्ट करती है उसकी पोजीशन पर, और चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v है. So this is the charge density. Current density, by the way, is, so there's T as well here. Current density, charge density is simply this, that a charge at position r naught. अब अगर इस x को as it is ही हम लेते हैं, so this x is going to be here because this is the position. ये जो है ये फ्री वेरिएबल है, ठीक है. So when r is equal to r naught, this gives us non-zero number. So r naught की जगह पे आ जाएगा x, v की जगह पे आ जाएगा ये vx जो है, and we have a current density. लेकिन अगर मैं इसको exactly solve करना चाहूँ, which is still not that difficult, but we will have bit complication that r naught will be this thing. लेकिन क्योंकि r naught is pretty small, especially if you look from far away, this is just oscillating here, so it's almost at the origin. So let's take x to be almost 0, so this becomes 0, and v is given by this, and also assume z to be 0, that we are at the origin. So in that case, current density is q, and velocity is only x directed, so minus q e naught m omega cosine omega t. Sorry, sine और वो minus omega t है तो ये प्लस हो जाएगा. So this is our current density. सर थोड़ा पहले से रिलेटेड सवाल है. सर जब एंटीनास पढ़ते थे उसमें जे ऐसे ऑसिलेटरी फंक्शन लेते थे, सर उसमें रो जीरो की लेते थे. जो कंडक्टर में जो करंट होती है, in several situation the charge density is 0. क्योंकि let's say ये वायर्ड है, अगर इसमें करंट नहीं भी चल रही तो पॉजिटिव फोर्स है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दोनों की जो नेट चार्ज है वो 0 है, ठीक है. जब और अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेट्स से दे स्टार्ट मूविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल चार्ज फिर भी हर जगह पे 0 रहता है, ठीक है. तो दिस करंट बट नो चार्ज. और उस एंटीना वाले केस से दैट अप्रोक्सीमेशन
is true only approximately, क्योंकि उस केस में actually there can be a charge density, क्योंकि उसमें ये वायर जो है यहाँ पे कट ऑफ है, so in reality when the current is flowing here, some charge is accumulated at these end points. Okay, the current is sometimes going into this thing and then going into this thing, coming back. So the charge, this is almost like two capacitor plates. Okay. So उस case में it was not strictly true. But in general, when we have conductors, there is current, but there is no charge. Okay. ये हमारे पास आगे करंट. So delta function will still be there, and R naught is now 0. So this is how scattering problems are solved. You have incident field, you have a scatterer. So one way of solving the problem is that you compute the current that is generated by the incident field, and once you have current, then we know how to compute the field radiated by a given current. ठीक है? अब ये देखें, ये करंट जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, और स्पेस डिपेंडेंट है. अब मैं एक दो पॉइंट है वो वादे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम्स के दौरान नोट किया कि आप लोग में से कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हैं इसके बारे में. हमारे पास ग्रीन फंक्शन जो है वो दो हैं. एक ग्रीन फंक्शन है ये वाला, इट इज दिस, और दूसरा ग्रीन फंक्शन है ओमेगा वाला था, which is I think minus so let's see, I think it was like this. जब आप टाइम डिपेंडेंट करंट यूज करेंगे तो आप ये वाला ग्रीन फंक्शन यूज करेंगे, टाइम डिपेंडेंट ग्रीन फंक्शन. जब आप फेजर फॉर्म इसकी यूज करेंगे, यू विल यूज दिस ग्रीन फंक्शन. आप में से काफी लोग जो हैं उन्होंने ये किया होगा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि फेजर फॉर्म वाला ग्रीन फंक्शन और करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट यूज करें. इट डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम. So इसमें भी जब आप ये भी यूज करेंगे, the first thing which is easiest step is usually to take the integral with respect to t prime. तो उससे फौरन वो फेजर फॉर्म वाला आता है. So it's the same thing. और हमने अप्रोक्सीमेट इक्वेशन भी फेजर फॉर्म की डेवलप की हुई है फार फील्ड की, तो उसमें हम फार फील्ड वाली डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए आसानी है कि आप इस जे की बजाय जो फेजर फॉर्म वाला जे है वो हासिल कर रहे हैं. इसके लिए फेजर फॉर्म क्या होगी, आपने ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है कि जिसका आप रियल पार्ट में एक डिफरेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करके तो आंसर जो है वो ये आ गया, माइनस आई ये हो. क्योंकि अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट लें तो इसमें जो आयोटा साइन है वो आयोटा आयोटा -1 इंटू माइनस प्लस, एंड यू विल गेट दिस. कोसाइन का इंटीग्रल हमने लिया था, इट वाज प्लस साइन माइनस ओवर दिस. So yeah, अब हम
एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना चाहते हैं रेडिएटेड पावर की फार फील्ड में, सो वी हैव टू कंप्यूट, लेट्स जस्ट कंप्यूट द फार फील्ड. अगर आपने एक्चुअल फील्ड कंप्यूट करना है तो यू यूज द एक्चुअल ग्रीन फंक्शन. सो इन द फार फील्ड वी हैव ऑलरेडी approximated the vector potential by this. अब आप में से बाद लोगों ने यहाँ पर ये जो फेजर फॉर्म वाली करंट है इसकी जगह पे जो टाइम डिपेंडेंट करंट है वो सब्स्टिट्यूट की हुई, which is not right. So let's substitute this thing here. Let me check the we're going to जी किसमें अब कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा में घटेंगे. सो कन्वेंशन इज दैट वी डोंट राइट दैट. बाल बुक्स में वैसे लिखा भी होता है, ठीक है, बट द मोस्ट पॉपुलर कन्वेंशन इज दैट वी डोंट नीड टू राइट इट, क्योंकि वो हमेशा हर जगह पे वही फैक्टर आते हैं. बट यू नो दैट व्हेन यू नीड द एक्चुअल टाइम डिपेंडेंट करंट आप उसको मल्टीप्लाई करके फिर रियल पावर देंगे. Okay, so let's substitute this thing here. और दूसरी चीज ये है कि ये आपके पास J of R है, यहाँ पे आपको J of R प्राइम चाहिए. तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले जहां जहां भी R है या X है, Y है, Z है, उसको आप प्राइम कोऑर्डिनेट से चेंज कर लेंगे. So we get A as minus iota x hat q square E naught m omega delta phi prime, sorry, minus iota k n hat dot r prime. So r prime पे ये जो इंटेग्रल है, तीनों इंटेग्रल खत्म हो जाएंगे. दिस इज 3 dimensional डेल्टा फंक्शन. And r prime will be replaced with 0. Okay, this is r prime minus 0 hai. So this will become 0 and we have mu naught minus iota mu naught 4 pi r m omega q square E naught x. हाँ, अगर आप टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. कोई बात इन फेजर फॉर्म इट कैन बी रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल टाइम डिपेंडेंट फील्ड होगा वो रियल होगा. ये ए आ गया और बी जो है इट इज एक्चुअली लाइक दिस. इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड इन the far field like this. So you minus minus plus, so iota square minus mu naught 4 pi r. ये k है, so this is k q square E naught m omega n cross x hat. Or just to refresh your memory, what is n? N is a unit vector in the direction of r vector. मैंने गलती से शुरू में स्क्वायर ले लिया हुआ, तभी स्क्वायर नहीं चलाते. It would have been better if we had taken it like r hat. Well, अभी चलते हैं इसके साथ. So this is B. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं. This K is
is nothing but omega over c. So omega se cancel ho jayega, we will have a c here. Q square E naught mc and what is E? Electric field can be written from Maxwell equations as minus iota as del cross B over iota omega mu naught epsilon naught, and del cross can be approximated in the far field by minus iota k n cross B. It becomes, that's right here. ये माइनस आयोटा आयोटा से क्या माइनस है क्या, and we have, और जब b को पुट करेंगे ये माइनस माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा, and we are left with mu naught k q square E naught बल्कि एक म्यू नॉट जो है वो इस म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा. We have 4 pi epsilon naught m omega c and n cross x hat. ठीक है, चेक करने की गलती तो नहीं है जी. और k अगर लगा दें तो ये बन जाएगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, नीचे c स्क्वायर आ जाएगा, q स्क्वायर e नॉट 4 pi epsilon naught mc square r n cross x. So this is our electric field. So essentially we have solved the problem. We now have electric and magnetic field in the far field that are scattered by a charge particle, by a plane. और अगर आप इसको देखना चाहें, you can see it like this. This is z-axis, this is x-axis, and this is the direction of propagation of incidence. Let me write it ki hat, and this is n hat, and let's say if this is angle theta, what is this factor? N cross x will be cosine theta, okay, this is 90 minus theta, so n cross x is 1 into sine of this, which is cosine theta, और उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जब इस डायरेक्शन का आप क्रॉस लेंगे n के साथ इसके साथ, the angle is 90, so 1, so essentially we have और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पर. सो जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड जो है वो कोसाइन थीटा है. सो थीटा इज कोसाइन थीटा इज मैक्सिमम हियर एंड इट इज 0 हियर. सो इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं है. अगर आप फार फील्ड में देखें और उसकी मैग्नीट्यूड जो है, इट्स मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. और सिमिलरली इट विल बी लाइक दिस. सो ये देखिए, यहां से प्लेन वेव आ रही है,
तो उसने चार्ज को एक्साइट किया, दिस इज एसेंशियली अ डाइपोल। अगर आप चार्ज डेंसिटी को भी देखें, जो करंट डेंसिटी है, तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। आपको पॉइंट डाइपोल का प्रॉब्लम दिया भी था, दिस इज ऑल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर, सो दिस इज एसेंशियली योर P naught। तो डायरेक्टली मैं उससे भी रिजल्ट लिख सकता था, बट आई डिड इट टू सी द पोलराइजेशन एज वेल। सो दिस इज जस्ट अ डाइपोल, और ये हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, बैकवर्ड भी, इधर भी, इधर भी, और मैक्सिमम जो है वो इस डायरेक्शन में है जिसमें थीटा 0 है या थीटा 180 है, और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज था उसके अलॉन्ग रेडिएशन 0 है। ठीक है, सो अगर यूं वेव जा रही है, इस पार्टिकल को एक्साइट कर रही है, तो इस पार्टिकल से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई वेव नहीं निकलेगी। कैंसिल कैसे करिए? नहीं, अगर फर्ज करें वो होती तो वो ऊपर यहाँ पे जा रही थी और नीचे यहाँ पे जा रही थी, तो ये और ये तो कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिलेशन के लिए एक ही पॉइंट पर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होने चाहिए। डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, दे डोंट कैंसिल। एनीवे, सो इस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम है। अब हम आते हैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की तरफ कि स्कैटरिंग में टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है। पहले हम कंप्यूट करते हैं इसकी एंगुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन। This we already know. The angular distribution is r square n hat dot s radiate like this. And what's the time average Poynting vector of radiation? It is one over 2 mu real of E cross B star। सो यहाँ मैं एक फैक्टर भूल गया, यहाँ पे एक फैक्टर एक्सपेंशन आयोटा के आर लिखा। So we get 2 mu naught, E का ये एक्सप्रेशन है Q स्क्वायर E naught 4 pi epsilon naught MC स्क्वायर R। ये जो है जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। B की वैल्यू है माइनस म्यू नॉट K Q square E naught 4 pi R M omega, और क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे वी हैव n क्रॉस x hat क्रॉस n क्रॉस x। यहाँ से देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये Q4 हो जाएगा, E नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी हैव 16 into 232 pi square epsilon naught m square omega c square r square। Let's now see this vector. So इसको आप इमेजिन कर लें, दिस इज a vector
this is B vector and this is C vector. So और हम अगर सब लोग ये वाला फार्मूला बस याद रखें, it's probably this minus, अगर इसी को मैं लगाना चाहूँ तो let's write this first. So माइनस साइन आ जाएगा, उससे ये प्लस हो जाएगा, n क्रॉस x हैट क्रॉस इसको फिर देख लेते हैं। ये Q4 आ गया, E नॉट स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर ओमेगा c स्क्वायर r स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर, चले अभी फिटा देंगे, E नॉट स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर ओमेगा c स्क्वायर r स्क्वायर इसको देखें। सो ये ध्यान रखें, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n। सो इसका जब हम पहली टर्म लिखेंगे a डॉट c, इसका और इसका जब डॉट होगा, दिस b कम्स एज इट इज n hat cross x hat, this will be mod square, इसका और इसका डॉट माइनस c, ये वैसे आ जाएगा, और इन दोनों का जब डॉट होगा तो आंसर 0 होगा, क्योंकि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। सो वी गेट दिस। ये आ गया हमारे पास S hat, एवरेज रेडिएशन है। इसको आप यहाँ पे पुट करें, इसका n हैट ले लें तो n हैट खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एंड यू हैव द रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्कैटरिंग में इसकी बजाय जो कैरेक्टराइजेशन की टर्म यूज होती है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टू कंपेयर डिफरेंट स्कैटरर। Differential scattering cross section, which is defined as the angular distribution of radiated power divided by the magnitude of the incident power. So incident power क्या है हमारे लिए, हमारे पास incident power is 1/2 mu naught real of E cross B star, which is, this essentially normalizes the power angular distribution. So E cross B star, let me write it, E incident, E incident. So आ जाएगा x cross y is z hat, and then we have E naught square over c, and that's it. और इसकी मैग्नीट्यूड जो है उसमें z hat खत्म हो जाएगा। अब हम लिखते हैं उसका d सिग्मा ओवर d ओमेगा, पॉजिटिव आ गया, x क्रॉस y ले लें तो z आ गया। उनको वो फेजर फॉर्म में लिखें आप तो वो खत्म हो जाएंगे फैक्टर्स, या अगर आप उनके साथ करना चाहते हैं तो फिर ये फार्मूला यूज नहीं होगा। फिर आप जो है जो टाइम डिपेंडेंट है उसके लिए अगर टाइम एवरेज लेना हो तो ये, so in phasor form this is equivalent to this. So अब हम ये इसका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लिखते हैं,
उसका पहले n डॉट n लिया तो वो n खत्म हो गया, r स्क्वायर से वो r स्क्वायर खत्म हो गया, और हमने e नॉट स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट c से डिवाइड करना है उसको, तो आ जाएगा Q4 e नॉट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये नीचे से म्यू नॉट है ही नहीं, तो म्यू नॉट हमने मिस तो नहीं किया, नहीं म्यू नॉट कैंसिल हो जाता, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 म्यू नॉट c ऊपर चला गया, तो नीचे आ गया 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर ओमेगा c स्क्वायर n क्रॉस x hat, which is Q4 C से कैंसिल हो जाएगा, and we have 16 pi square mu naught epsilon naught m square omega c. So let's see what do I have in the notes. So Q naught square mu naught E naught 4 pi r एवं हमने B की वैल्यू सही लिखी है, यहाँ क्या यहाँ का E और B जो है वो ये है, वहां पर B हमने लिखा है माइनस म्यू नॉट Q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r m c, वो ओमेगा की जगह पे C होना चाहिए। आप लोग लगता है गौर से नहीं देखते हैं, अगर ये C हुआ तो ये क्या हो जाएगा सी क्यू, इधर E का E चेक करने से ही तो सी क्यू, इसकी जगह पे आ जाएगा सी क्यू हम आ गए यहाँ तक, और ये ओमेगा नहीं है, ये सी क्यूब है, और ये टर्म ऐसे ही आ रही है, मेरे पास आना चाहिए Q4 और भी कहीं गड़बड़ है। ई में क्या है, ये वाला ये 4 पाई है, ये ई नहीं आर है, ये देखें ये बी जो है ये हमने यहाँ पे पुट करना, तो ये योटा योटा से क्या माइनस आ गया,
और वो माइनस प्लस हो गए। अब आ गया k q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट इस म्यू नॉट से कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये m है, r मिसिंग है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा नहीं है, ये वाला ओमेगा, m ओमेगा c r, अब ठीक है ये वाला, ठीक है। और इसको हमने सिंप्लीफाई तो नहीं किया कहीं आगे, ठीक है। अब जो है वहां पे हमने पूरा उसकी वैल्यू q स्क्वायर e नॉट, k का हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा c से, ओमेगा ओवर c से, वो c स्क्वायर बन गया, ओमेगा खत्म हो गया, वी हैव m, और ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ है, और बाकी वहां पे ठीक लिखा हुआ है, q स्क्वायर e नॉट एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर c क्यूब r स्क्वायर, q4 e नॉट 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर c क्यूब r स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, ये म्यू नॉट ऊपर आ गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया, और आ गया m स्क्वायर c स्क्वायर ये एक्सप्रेशन ठीक है, तो ये टॉप ए का, हाँ ये ठीक है, ये आ गया माइनस के एन क्रॉस, ये म्यू नॉट से कैंसिल हो गया, वी हैव एप्सिलॉन नॉट हियर, ओमेगा ओवर सी, रिजल्ट बनना चाहिए कि ये म्यू नॉट स्क्वायर हो, और नीचे हो 16 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। ओके, लेट्स सी, हाँ मेरा ठीक है। अब देखें, अब ये जो म्यू नॉट हमें पता है ये c होता है 1 over mu naught epsilon naught square root. So what is c square? C square is this. So what is mu naught? या चलें म्यू नॉट की वैल्यू देख लेते हैं। म्यू नॉट इज यहाँ पे 1 over epsilon naught c square. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, and we have d sigma over d omega q4, और यहाँ पे आ गया ये वाला 416 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर c4 n हैट x हैट स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। इसमें अगर आप देखें, लेट्स नाउ स्पेशलाइज स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग के लिए Q is equal to E, and let's call the square root of this factor as RE. So this is E square 4 pi epsilon naught mc square, and this factor is, which is all constant, comes to about
2.82 10 power minus 15 meter. Okay? जी इसका स्क्वायर रूट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mc स्क्वायर. ठीक है? And this thing is called classical electron radius. क्योंकि अगर आप इसका this is the differential cross section which has unit of meter square, and this roughly gives the radius. आप उसको अगर पूरे solid angle पे integrate करें, let's say we compute the scattering cross section, the second term, which is used for comparing different scatterers, is scattering cross section, which is nothing but sigma, an integral of the differential cross section over the full solid angle d omega, and solid angle is sine theta d theta d phi, where theta goes from 0 to pi and phi goes from 0 to 2 pi. And ये जो है इसको अगर मैं रखूं, ये बन जाएगा r e square 0 to 2 pi 0 to pi n cross x hat square sin theta d theta d phi. Let's try to compute this thing. So वहाँ पे हमने ये फिगर बनाई थी. Let's say this is x, this is z axis, so this is y axis, and this is n. So let's say this is angle theta. So n cross x only depends on the angle between the two, and not on the position of this unit vector कि ये z-x plane में है या इधर है, कहीं पे भी है. In the cone, as long as this theta is the same, n cross x is the same. So n cross x इस केस में क्या होगा, अगर मैं थीटा को u ले लूं, so this is nothing but sin square theta, right? And ये sin theta, ये sin cube theta हो जाएगा, d theta d phi. phi पे इंटीग्रल जो है वो 2 pi आ जाएगा. और इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है. उसके लिए आसानी इस तरह से होगी, अगर हम साइन क्यूब को ब्रेक कर दें दो टर्म्स में. एक होती है 4/3 साइन थीटा शायद, और एक साइन 3 थीटा, समथिंग लाइक दिस. तो आप उस तरह से इसको करके तो इसको इंटीग्रेट कर लें. दिस विल, I haven't done it, but roughly this will be not like this actually, but it should come out to around pi r square, the total cross section. Roughly this will be of the order of pi r, जो कि हम देख भी रहे हैं, क्योंकि this number will be like, I don't know, 1 2 3 somewhere around that. So this is, let's say, a spherical electron. So the scattering cross section roughly measures the interacting area of the scatterer with the incoming wave. This is not the geometric area of the scatterer. Okay, geometric area of the scatterer can be different from the scattering cross section, but usually they are about the same for normal situation. For example, अगर आप इससे scattering compare करें, roughly जो scattering cross section है, this will be equivalent to the cross sectional area of this scatterer. Similarly, like you have let's say a plane
radar is sending some wave, so इससे scatter होके waves वापस आ रही हैं, और depending on its cross section, अगर इसका cross section ज़्यादा है, so you will be able to detect it easily with another receiving antenna. जो कि नॉर्मली कमर्शियल एयरक्राफ्ट में यही कोशिश की जाती है, डिज़ाइन ऐसा हो कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आराम से जहाज जो है वो नज़र आ रहे। जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनमें ये कोशिश की जाती है कि डिज़ाइन ऐसा हो कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो जो इसका ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है उससे कम हो इन सम फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ताकि कोई रडार जो है वो इसको इतनी आसानी से ना देख पाए। So ideally, if let's say at a given frequency, if you want 100% invisibility, you have to have a zero cross section, zero scattering cross section. इसका geometric area तो है, but its scattering cross section have to be close to zero for it to be invisible in that frequency. Did it? So this thing has the units of the length square. So roughly this corresponds to an area. So this is called a cross-sectional area. And it turns out that for most common scatterers, this number is roughly close to the geometrical cross-sectional area of the scatter. So that's why this has significance. But as I said, there is no direct relationship of this thing to the geometrical cross-section. So this varies from scatterer to scatterer. आप कोई ऐसा फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते फॉर आर्बिट्रेरी स्कैटरर के, अगर उसका इतना ज्योमेट्रिकल एरिया है तो इतना क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, सो एसेंशियली व्हाट डज दिस टेल अस? दिस ओनली गिव्स अस द टोटल स्कैटर्ड पावर। ऐसा ही है जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। So if this is 0, it means there is no scattering. If this is high, it means the scattering is very large. So this thing we intuitively associate with, let's say, bigger scatterer. जितना भी scatterer bigger होगा उतनी उससे ज़्यादा radiation है वो scatter होगी। So this does have significance. ठीक है? और and definitely there is no direct relationship to, like a general relationship between the area of the scatterer and this thing, but there is rough correspondence, and this is actually the basis of all the stealth designs. किसी भी आप बेशक underwater stealth design की बात कर रहे हैं, that you have to reduce the scatter power by applying different design techniques or different materials on the surface that absorb in a certain frequency regime and doesn't radiate out. What's the in cross x mod squared sin squared theta? I assume the theta to be the angle between x and n. So in n cross x sin theta ही होगा। हाँ कुछ भी है, क्योंकि आपने पूरे सॉलिड स्फीयर पे इंटीग्रेट करना है, डजंट मैटर कि आप रेफरेंस कौन सी एक्सिस देते हैं। ठीक है, थीटा जस्ट हैव टू वेरी फ्रॉम 0 to 90, और दूसरा एंगल जो है इट विल वेरी ओवर 2 पाई। सो फॉर इजीनेस आई टुक इट टू बी लाइक दिस। मैं पहले जब एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे मैंने थीटा जो है वो जी एक्सिस के साथ ले लिया, जस्ट डिपेंड ऑन द रेफरेंस। नहीं, एंड दिस इज अमेजिंग that for low frequency scattering, the scattering is independent of the frequency of the wave. The scattering cross section, ठीक है, ये इस पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि पार्टिकल फ्री है तो it actually doesn't even depend on that. So this thing is actually just proportional to this RE square. और ये जो नंबर है, जैसे जो मैंने रेडियस लिखा है 2.8 10⁻⁻15, this is pretty close to the geometric
radius of an electron of its charge distribution. अगर जब पार्टिकल के करीब जाते हैं तो things become fluid, कि पार्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है. Since we don't know, let's say, the structure of electron. अगर आप प्रोटॉन की बात करें, even then things become blurred. The gluons are going here. Where's the boundary? So, but roughly, this gives us an idea of the radius of the electron. Okay, the scattering cross section is usually proportional to the geometric cross section. पार्टिकल के चारों तरफ मतलब पूरी बाउंड्री पे कोई लगाने पड़े डिटेक्टर्स, तो वो एफिशिएंट वे है क्लियर करने के लिए क्रॉस सेक्शन या स्कैटरिंग प्रोसेस? नहीं, पहली बात तो ये है, आप मेजर करने की बात कर रहे हैं. मैं ये एक्सपेरिमेंटली बात कर रहा हूँ, तो मतलब अगर मुझे स्कैटरिंग मेजर करनी होगी तो एक पार्टिकल स्कैटर हो रहा है. अगर तो इट्स नॉट ओनली फ्रॉम पार्टिकल, कोई भी चीज़ है. लेट्स से आप फील्ड जो है वो स्पेसिफाई करना चाहते हैं हर पॉइंट में, ठीक है, कोई भी स्कैटर है, तो आपको ज़ाहिर है डिटेक्टर हर पॉइंट पे लगाना पड़ेगा अगर तो आप मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना. और बल्कि सिर्फ इसी की क्या, कोई भी क्वांटिटी है, लेट्स से टेम्परेचर है इस रूम में, अगर आप हर पॉइंट पे मेजर करना चाहते हैं तो आपको हर पॉइंट पे डिटेक्टर लगाना पड़ेगा. जी जी. कौन सी पॉइंट? जो रिसीविंग एंटीना के लिए कह रहे हैं, दिस इज वो भी रफली इसी तरह से कंप्यूट किया जाता है, बट दैट्स स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें हम ये देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन से अगर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो एंटीना जो है वो कितनी पावर जो है वो अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उससे वो रिलेटेड होती है. जो इसमें ये टोटल क्रॉस सेक्शन है, दिस इज रिलेटेड टू द टोटल पावर रेडिएटेड स्कैटर्ड बाय द स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस. जो सर में डिटेक्टर्स लगे हैं वो किस तरह मतलब गाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे डिटेक्टर्स लगाने हैं, पोजीशन किस तरह वो डिफाइन करते हैं. और अगर स्कैटरिंग होती है तो क्या पता ये पॉसिबिलिटी भी है कि पार्टिकल डिटेक्टर पहुंचे पर डिले कर जाए, तो फिर वो किस तरह पोजीशन को अलग करते हैं? So, मुझे डिटेल से तो ज़्यादा नहीं, बट इट्स रफली लाइक दिस. दिस इज द बीम पाथ, ठीक है. लेट्स से चलो इधर कर लेते हैं. दिस इज द बीम पाथ, और जो कुलियन पॉइंट है, एक बीम इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज टू बी एन एम्प्टी स्पेस अलोंग दिस लाइन, और जब यहाँ पे स्कैटरिंग होगी तो पार्टिकल इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, और इन डायरेक्शंस को भी जा सकता है. सो दे हैव cylindrical detectors, and the detector is actually a big cylinder with a series of detectors. तो छोटे छोटे इसमें हजारों बल्कि आई थिंक मिलियंस ऑफ डिटेक्टर्स जो हैं वो लगे हैं, which trace different physical quantities. So उसमें ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है तो उसकी वो ट्रेजेक्टरी भी ट्रेस कर रहे हैं कि अब ये यहाँ से अभी यहाँ पे, ठीक है. और अगर ये यहाँ जाकर मुकम्मल तौर पे अब्सॉर्ब हो गया तो इट एंड्स. सो दे डोंट जस्ट हैव वन डिटेक्टर. अगर तो इस बड़े को पूरे को वो एक नाम दे दें, लेट्स से दिस इज एटलस डिटेक्टर, लेकिन दैट डिटेक्टर इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ डिटेक्टर्स. इस तरह से चलिए उनको सवाल करने के 1-2 मिनट रह गया तो वी वोंट बी एबल टू टेक इट फार अवे. सो मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, उसमें मैंने एंड पे 1-2 और कंप्यूटेशन की हुई है कि ये जैसे इसमें एक्स पोलराइज्ड वेव थी, अगर वाई पोलराइज्ड वेव इंसिडेंट होगी तो स्कैटरिंग क्या होगी, हर चीज यही होगी, जस्ट जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे वाई आ जाएगा, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. लेकिन उसमें फर्क है. फर्क ये होगा कि लेट्स से यहाँ पे पार्टिकल है, जो वेव यू आ रही है, जो यू इसमें इंसिडेंट होगी, ये यू डाइपोल बनेगा, ठीक है. तो इससे जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम है वो इस प्लेन में तो है आइसोट्रॉपिक, लेकिन इस प्लेन में क्या है, एनिसोट्रॉपिक है, कि इस तरफ को 0 है, इधर मैक्सिमम है,
इधर थोड़ा ज़्यादा है, इधर और ज़्यादा है, इधर, तो आप इसको पोलर प्लॉट जो है वो यूं करके बनाएंगे इस प्लेन में। और अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और इस प्लेन में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, इट्स आइसोट्रॉपिक, क्योंकि ये डायपोल यूं बन जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से देखेंगे एक जैसे डायपोल नजर आएगा। सो इस प्लेन में इट्स सर्कल और इस प्लेन में ये फिगर 8 है। अब अगर ये वाली पोलराइजेशन आती है तो यहाँ पे आके इंसिडेंट होगी, तो ये डायपोल यूं बन जाएगा। अब क्या होगा, इस प्लेन में सर्कल है और इस प्लेन में वो फिगर 8 है। अब अगर अब यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट हम उसको कहते हैं जिसमें रफली दोनों ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन हाफ हाफ होती है। अब ये अगर इस पे आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो आप जो रिजल्टेंट है यहाँ पे उसको इमेजिन कर सकते हैं दोनों के इंडिपेंडेंट का रिजल्टेंट। अब इसकी वजह से जो है वो हमें पता है कि इट्स फिगर 8, और इसकी वजह से इसकी वजह से इस प्लेन में ये है सर्कल, और इसकी वजह से इस प्लेन में ये है फिगर 8। खैर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो दोनों मैक्सिमली स्कैटर कर रही हैं, इट्स ओके। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे डायपोल है, अब अगर ये पोलराइजेशन आ रही है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा इसका स्कैटर्ड, और इसका क्या मिलेगा, 0। तो अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट आई है इस पॉइंट पे आके इसने हिट किया पार्टिकल को, तो इस डायरेक्शन में जो स्कैटर हुई है वो प्रीडोमिनेंटली इस पोलराइजेशन वाली होगी, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन है इसकी वजह से जो रेडिएशन इस डायरेक्शन में है वो 0 है। सो अनपोलराइज्ड लाइट जब फ्री चार्ज पार्टिकल से स्कैटर होती है तो जो उसके जो स्कैटर लाइट है इट्स पार्शियली पोलराइज्ड है। सो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी आप कंप्यूट कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस देखें, ठीक है। और अगर आप जैंगुल की बुक देखें तो उसने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि जो बिग बैंग है ये उसके रेमिनेंट्स हैं, दे हैव partial polarization, and one of the reason of that polarization is the scattering of those waves from charged particles in the universe. अब उस टॉपिक को थोड़ा सा उसमें है, there is more complication involved, किस डायरेक्शन में, और जो इंसिडेंट लाइट है उसमें थोड़ी सी एनिसोट्रॉपी चाहिए, but basic physical phenomena is this Thomson scattering. इसी तरह प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कहते हैं जिसमें हम कंडीशन इस तरह से सेट करते हैं, there are moving charged particles, electrons and ion cores, so the radiations that we see coming out of it is also polarized because वो जो electromagnetic waves खुद emit करते हैं they also get scattered by the particles and you see polarized light. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी मेथड को यूज करते हुए आप स्कैटरिंग स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम बाउंड इलेक्ट्रॉन। बल्कि मैं कोशिश करूंगा होमवर्क में प्रॉब्लम दे दूं। लेट्स से एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री बट इट्स बाउंड बाय अ स्प्रिंग टू एन ओरिजिन। सो व्हेन लाइट कम्स इन इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, बट नाउ ऑसिलेशन में दो फैक्टर हैं, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है स्प्रिंग की और एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So the motion is a combination of the two. So, but once you have found the motion of, क्योंकि जो important problem है जब भी चार्ज पार्टिकल से स्कैटरिंग की बात करें तो स्कैटरिंग itself इतना ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल प्रॉब्लम है करंट फाइंड करना या चार्ज पार्टिकल की मोशन फाइंड करना। That you have an electromagnetic field, how does the charged particle behave? Once you have the velocity of the charged particle and its position, आप J लिख सकते हैं, J के बाद like a mechanical process, आप E और B निकल आएगा, and then you can find the scattering cross section, total cross section. चलिए, थैंक यू। आप लोग अपने एग्जाम और होमवर्क्स दे दें पिछले।